Acha, ready? Yeah, we are ready, sir. We ready to go. Yeah. Come in, मैं लाता हूँ. Benim işte yapıyor şey. अच्छा बैठो. Amma ये faculty is not. Enjoy kursi और enjoy. उनका सब kursi और वहाँ है. Hem side I have to cross kursi और. Hem side I have to cross kursi. YouTube पे हो तो सही रहेगा. मोबाइल ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे मोबाइल प्रेजेंटेशन वो James है ना अच्छे presentation online presentation है नहीं सर राइटिंग क्या ultimus वो already होंगे ना इनके पास ये मत से तो present price अच्छा कोई वो खुद दे it's not online yes like such every कोई से तो मैसेज ये आपको है ना आपको offline से बड़ी फिर प्रोडक्ट offline बाकी जो ऑनलाइन बस कुछ आती है व्हाट इज वन प्रेजेंट कुछ ऐसा है ऐसा मुझे बनते हैं चेयर पर्सन है कैसे जाए कमी कैसे जाए करो बस करो ठीक है लेफ्ट Isso é outro minutes. Excuse me. Exactly. Nossa, time is very because after the time yes, create very after what to say. So you go to the does it actually guest or guest मजाक किलो गुलाम से तो Kursi nama juga ni yang kursi apa?
Yapıyor lan. Uçaksa. Yapıyor ne yapıyor? Yapıyor space. Yeah. ये कुछ ऐसा ऑडियो रिकॉर्ड में जो ऑडियो इसको चेक करेंगे चलो ठीक है हो गया बस बेटा इसका यही वाला सेशन है यहाँ पे इसके बाद 2 सेशन होंगे कंप्यूटर में कैसे आप सेशन ये दिखेगा तो सब लोग आराम से अटेंड कर पाएंगे हमारी ये एक सेशन यहाँ पे है तो आप जस्ट नेवर कैन एक्टिव फोन पे कंट्रोल करनी ठीक है बड़ा रोज कितने ये भी यहाँ पे ठीक है बड़ा दरवाजा वाले बहुत अंदर गैस में बोल रहे हैं रोजी तो इस साइड पर भैया जिसकी जगह है बैठो थोड़ा अगर जगह आगे नहीं है तो निकल जा बाहर अरे बेयू तो एक कुर्सी बैठ जो फ्रंट वाली कुर्सी है ना अभी भी ज्यादा बेयू कुर्सी बैठो वहां आप इस वाले में नहीं थोड़ा सामने वाला पार्टी ना वो बैठिए मुझे ले लो व्यू बैठो ये वाली छोड़ दो उम्मत काउंटर व्यू ये तो ये वाला तो उम्मत होगी उस साइड आगे है ना मुझे बैठो बैठो
Honorable Chairperson, Dr. Ejaz Abdullah, Assistant Professor Economics, we welcome you, sir, here. Our invited esteemed guests, respected faculty, staff, and their students. It gives me an immense pleasure and honor to welcome everyone joining us today in this plenary session second of this national conference over here. I welcome all the eminent speakers of the session who, besides their busy schedule, make it to this conference over here and share their and grace this occasion and will share their valuable knowledge and experience with participants present over here. I'm sure that this conference will prove to be productive and informative for all the members participating in this conference. Ladies and gentlemen, before we begin our session today, we have among us Dr. Ejaz Abdullah, Assistant Professor Economics, who will serve as chairperson for this session, and I take this privilege to introduce our chairperson. Dr. Ejaz is presently working as Assistant Professor in the Department of Economics, Maulana Azad National Urdu University, and is currently posted as Satellite Campus, Srinagar. Dr. Ejaz has completed his doctorate in economics from Jamia Millia Islamia, New Delhi, and his research expertization includes environmental health economics. Dr. Ejaz has more than 10 years of teaching and research experience in various reputed institutions such as Jamia Millia Islamia, New Delhi, University of Kashmir, and we have Inclin Trust, New Delhi. Dr. Ejaz has also worked as a research assistant in various research projects funded by University Grants Commission. He has also presented research papers in various national and international conferences and has published several research articles in the journals of international repute. Now I would like to request Dr. Bashir Ahmed, Assistant Professor Management, GDC Bureau, to please facilitate our chairperson, Dr. Ejaz Abdullah, with a memento and a certificate. Please. Thank you, sir. Now I would like to hand over further proceedings of the session to our esteemed chairperson, Dr. Ejaz Abdullah, to please continue with further proceedings. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that this is the second day of the conference and the first plenary session of the second day.
We have a right mix of academicians and practitioners for this plenary session from the premier institutes of the country. We have 4 resource persons for this session. Let me put briefly for coherence the order of the presentations for this session. Our first resource person is Dr. Hasibur Rahman. His theme for the session is social protection and the role of state, market and third sector. Dr. Hasibur Rahman is currently working as Associate Professor in the Department of Social Work, Jamia Millia Islamia, New Delhi. Before this, he was working as Assistant Professor in JMI New Delhi and Bhimrao Ambedkar College, New Delhi. He has a vast experience of development sector as well as with organizations such as CAPAR. Dr. Hasibur Rahman VM has PhD in social work from Delhi School of Social Work and LLB from University of Delhi. He has supervised a number of scholars in PhD and published many research articles and book chapters. Then, as per the order, our next speaker will be Mr. Yogesh Devan. He is the President, People's Research Society, Bhopal. His theme of the presentation is Future of Social Protection. He has been active in several people's issues and rights in Hindi media. He is part of initiative called PRS, People's Research Society, based in Bhopal, that conducts seminars and studies on issues of socio-political and cultural impact. The third important presentation will be by Mr. Bhat Iqbal Majid, the Assistant Professor in Central University of Jammu. His theme for the presentation is Social Protection and Labour Market Participation. Bhat Iqbal Majid currently teaches at the Department of Social Work, Central University of Jammu. He completed his Masters in Social Work from University of Kashmir and doctoral studies from Center for Social Medicine and Community Health, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. His broader area of research is on health, armed conflict and nomadism. His work focused on Tashman tribal group, Bakrwals of Jammu and Kashmir. His research focused on engagement between modern state institutions and Tashman groups. He has provided full scholarship to attend Global Minority Rights Summer School at Tom Lantos Institute, Budapest, Hungary. He has received fellowship for attending Summer School on Mobility and Work-Life Situation organized by University of Freiburg, Germany. He has also attended and Summer School at Edinburgh India Institute, the University of Edinburgh, Scotland. He has appeared in many reputed journals like Taylor and M and Francis, Indian Journal of Social Work and so on. Our last presentation will be by Professor Tariq Mohammad Quraishi. He is Assistant Professor in Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. His theme of the presentation will be Social Protection and Accountability and Governance. Professor Tariq is Assistant Professor at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai and Director, Koshish Field Action Project on Homelessness and Destitution. He has served in a number of committees constituted by different ministries of government and the Supreme Court of India over the period of time related to shelters for urban homeless, social audit and social protection. He is also founder of Sanji Takat, National Alliance of Civil Society Organizations on issues of poverty, social protection and justice. He was the recipient of Ashoka Fellowship in 2012, Aspire India Fellowship in 2018 and National Foundation of India Fellowship in 2006. He was listed in under 30 achievers list by Forbes India for work on urban poverty, homelessness and destitution. So the next is, let me specify the guidelines for the presentations for all the resource persons here. We will be having 8 to 10 minutes for each presentation and there will be a buzz after every 8 minutes and resource person is supposed to conclude by 10 minutes. And the question answer session will be at the end of the session. It will be for 5 to 10 minutes and there is a request for all the audience here that please prepare your questions before you address them to the specified or specific speaker.
It should be objective and clear. Arguments, counter arguments, for that you can take the contact number of the resource person and discuss that after the conference, because we have a limited time, we have to do everything within this time span. Let me not stay between the resource persons and in between you, and let me first invite Dr. Hasibur Rahman, VM, Associate Professor, Social Work, Jamia Millia Islamia, and his theme is social protection and role of state, market, and third sector. Please. He will be presenting the. Thank you so much. Good morning, all of you. Am I audible? Yeah. Okay. Assalamu alaikum. I am Habibul Rahman, Associate Professor in the Department of Social Work, Jamia Millia Islamia, and I belong to Kerala. I am thankful to Government Degree College, Birwa, and Department of Social Work, headed by Dr. Mushtaq Ahmad Malla. I will be sticking to the time allotted to me. The topic given to me is social protection, the role of state, market, and the third sector. During COVID, many pieces of news came to our notice, and one of the piece of news which still stuck my mind is an old age couple. In the initial phase of COVID, an old age couple committed. Contact details of the resource person. Sure. So far as the time schedule is concerned. Okay, one single question. Am I audible? Hello, sir. Am I audible? Not very clear, but yes. Okay, sir. Sir, your area is social protection and role of state. This is the first part. I will not touch the second, market and third sector. Do you remember that social protection and role of state is right now an utopian concept so far as our state as Union of India is concerned? It is a developing stage. Do you think it is still at utopian stage? We are claiming much more, but at ground, nothing is happening like that. And what type of solutions are remedies as an injection, legal injection should be introduced to renew such remedies which we are claiming in drafts? I am really sorry, I did not get the question. Maybe it was not very audible to me. Please, one question. I will brief. Simply, social protection is right now utopian. It is utopian concept. And role of state is what state is claiming. It is not up to the mark. Data is there, but ground situation is totally different. Do you agree with it? If not, then what should be the solutions? Is that what you asked? Yes. Okay. I think in democracy, state means all of us. If we fail with one decision, we have to alter the decision and come out. State vis-a-vis the market with reference to equity or efficiency. Putting that in context of social protection was really a great effort by Dr. Hasibur Rahman. Thank you, sir. Thank you for your valuable inputs. Thank you for your. Thank you so much. Okay. नमस्कार, मैं योगेश और भोपाल से हूँ और पीपल्स रिसर्च सोसाइटी के साथ मैं काम करता हूँ। और मुझे जो टॉपिक है सोशल प्रोटेक्शन और उसका फ्यूचर, मुझे लगता है कि शायद ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस समय। और हम पिछले लगभग 30-35 साल से लगभग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब से हिंदुस्तान में लागू हुई है वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लगातार सोशल प्रोटेक्शन का खतरा बना हुआ है। हम लोगों ने आज़ादी के बाद जो संविधानिक
सिक्योरिटी की, संवैधानिक सोशल प्रोटेक्शन की जो बात की थी, और दोनों तरह से मतलब वो इकोनॉमिक मुद्दा हो या वो सोशल और कल्चरल मुद्दा हो, दोनों में ही खतरे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर ज़्यादातर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बात करूँगा, अभी मैं कल्चरल और सोशल की बात शायद ना करूँ क्योंकि टाइम नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि दोनों तरह के सोशल प्रोटेक्शन जो थे, जो हमको संविधान हमको देता था, जिसमें एक लिखा ही था कि हम सेकुलर सोशलिस्ट स्टेट की बात कर रहे थे, पर अभी हम जब देख रहे हैं कि सेकुलर सोशलिस्ट स्टेट का पूरा कंसेप्ट ही बदल दिया गया। पूरा हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ग्लोबलाइजेशन के दौर में न्यू एकदम लिबरल जो पॉलिसी आ रही है, जिसमें हम निजीकरण की ओर जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों के अधिकार उनके हाथ से, या लोगों का अपना जो भागीदारी थी एक स्टेट के चलाने में, वो सिर्फ वोट से ज़्यादा अब कुछ बची नहीं। वोट देने का एक अधिकार है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। स्टेट की भी ताकतें काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, चाहे वो सेंट्रल का स्टेट हो या राज्य का स्टेट हो। अभी जो भी ताकतें हैं, जो भी पॉलिसी है, वो अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े इकोनॉमिक ढांचों के से संचालित होती हैं। तो इस सबके बड़े खतरे सोसाइटी में अब हमको दिखने भी लगे। और अगर आप हमारी पिछले 20-22 साल की जो पॉलिसियां देखें, हमारी नीतियां देखें, हमारे संवैधानिक चेंज देखें, तो लेबर एक्ट से लेकर के चाइल्ड के संदर्भ में, महिला के संदर्भ में, अलग अलग तरह के जो राइट बेस सुविधाएं हमको मिल रही हैं, जो उसके संदर्भ में तो लगातार बदलने की स्थितियां बन गई। जिस तरह के हम लेबर एक्ट 44-45 तरह के लेबर एक्ट में हम लोग काम करते थे, हम अलग अलग सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अभी 4 कानूनों में हमने उसको ला करके खड़ा कर दिया। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ आबादी 5 किलो राशन के ऊपर आधारित हो गई। ये कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हमारी जो अपेक्षा थी आज़ादी के बाद कि हम हिंदुस्तान की हर आबादी का इसमें एक भागीदारी होगी, नेचुरल रिसोर्सेज में होगी, प्रॉपर्टी में होगी, लैंड में होगी। पर धीरे धीरे वो सब खत्म होकर के अभी आपको जिंदा रहने के लिए 5 किलो का राशन दिया जाता है। आप देखिए कि पॉलिटिकल सीन इतना है कि कोई भी इलेक्शन में बहुत छोटे छोटे चीज़ें भेंट करना है, या कुछ आपको साइकिल देंगे, आपको कंप्यूटर देंगे, आपको तीर्थ यात्रा करा देंगे, आपको कुछ और तरह के काम, और इससे आपसे वोट लिया जाता है। कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी नहीं हो रही, कोई बेसिक लैंड रिफॉर्म की बात अभी नहीं हो रही, कोई बेसिक रिसोर्सेज में बंटवारे की या उसमें सबका अधिकार है इसकी बात नहीं हो रही। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि कुछ लोग कोविड जैसे बुरे दौर में भी पूंजी जिनकी लगातार बढ़ती जाती है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि गरीबी का जो नीचे का जो आंकड़ा है वो लगातार अलग तरह से बढ़ रहा है, और उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप देखिए कि रोजगार के आंकड़े लगातार बहुत बुरे दौर में जा रहे हैं। आप देखिए कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स थे, जिनके कारण हम काफ़ी बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराते थे, जिसका जो प्रॉफिट था वो स्टेट का प्रॉफिट माना जाता था, अब हम पब्लिक सेक्टर को मैक्स करके और प्राइवेट सेक्टर की ओर चले, तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी एक निजी पूंजी की ओर चला गया है। तो ये जो पूरा सोशलिस्ट सिस्टम का जो कंसेप्ट था, वो हमारे समाज से धीरे धीरे एकदम ही कमज़ोर स्थिति में पहुंचा दिया। और अब हम इस आबादी को एक तरह जिंदा रखने के लिए, उनसे एक काम कराने के लिए, या उस आबादी को जिंदा रखने के लिए हम इस तरह के कुछ योजनाएं लाते हैं, जिसमें रोजगार गारंटी है, जो 100 रुपये का अगर मजदूरी देती है तो आपको जिंदगी भर 100 रुपये की मजदूरी मिलेगी पर डे की, पर आपके बारे में कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा कि आप कभी इस भागीदारी में कुछ और भी होंगे, या इस प्रॉपर्टी में, या जो पूंजी है इसमें कहीं आपकी हिस्सेदारी होगी। आपको 100 रुपये की मजदूरी करना है, आपको 5 किलो राशन अगर मिल रहा है तो आपको जिंदगी भर 5 किलो राशन ही ले करके जिंदा रहना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ और मिलने वाला नहीं है। तो ये जो पूरा हमारा है, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पूरे आर्थिक सवालों को, और इस पर कहीं कोई डिबेट नहीं, और ये पूरा सीन भी अगर आप देखते हैं तो जो एक और हम लोगों ने संविधान में आज़ादी के बाद लाए थे, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट,
वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को भी हम लोगों ने लगभग खत्म कर दिया। और हम जब 90 के दौर में IMF के उससे समझौता कर रहे थे, या किसी में है उनका सवाल हो, धीरे 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 वो सब आप खत्म होती जा रही हैं। उसमें जो सब्सिडी दी जाती थी, जिसके आधार पे एक सामान्य लोग भी वहां तक पहुंच पाते थे, अपनी पहुंच बना पाते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो एक तरह से हमने कल्पना तो ये की थी कि हम आज़ादी के बाद ऐसी नीतियां लाएंगे और जो नीचे कमजोर हैं उनको बराबर पे लाने के लिए भी एक समय आएगा कि हम सब लोग बराबर होंगे, सबकी बराबर भागीदारी होगी, सबका निर्णय की प्रक्रिया होगी। तो वो खत्म हो गया और अभी कुछ दूसरे सीन की ओर हम चले गए, और जो शायद कैपिटलिज्म के मॉडल से भी ज़्यादा खतरनाक मॉडल है। क्योंकि कैपिटलिज्म में भी अगर हम देखें यूरोप में और अमेरिका के अंदर, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था और अभी भी काफ़ी हद तक है ना। पर यहाँ जैसे हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ न्यू पॉलिसी को लोगों ने अपनाया है और जिसके आधार पे हम लोग अपना पूरी सिस्टम को चला रहे हैं, उससे समझ में आता है कि वेलफेयर स्कीम खत्म हो गई। आज पूरा हेल्थ सिस्टम निजी हाथों में है, आज एजुकेशन सिस्टम निजी हाथों में है। आप रोड पे चले जाइए तो आपको टैक्सेसों की भरमार है। अगर आप कुछ 100 किलोमीटर चलते हैं तो आपके जेब से 500 रुपये निकल जाएंगे टैक्स के नाम पर। वो पूरा निजीकरण की ओर जा रहा है। आप चाहे प्लेन हाथ से काफ़ी चीज़ें निकल रही। तो ये जो पूरा एक तरह का 90 के बाद का दौर, और इसमें पॉलिटिकल सीन ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो सभी वहां बैठ कर के वही कर रहा है जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमको करा रही है, जिनके हमने समझौता किया हुआ है। तो जब तक हम WTO या वर्ल्ड बैंक के WTO के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड का जो पूरा कंसेप्ट है, जिसने हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी कई चीज़ों को ला करके उपलब्ध कराया जो यहाँ की ज़रूरत, यहाँ की प्रोडक्शन होता था और जिसको ज़रूरत नहीं थी कि हम उसको यहाँ मंगाएं। पर खुला मार्केट है पूरी दुनिया का, यहाँ पे वो चीज़ डंप की जाती है और हमारे प्रोडक्शन पे हमको रोक लगाना पड़ने में वो होती है। तो ये हम देख रहे हैं। फिर हम अगर इसको इस तरह से भी देखें कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी हम बात करते हैं, ये भी एक तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसियों का मॉडल है ना। अगर हम इसमें पूरा देखेंगे कि जो संविदा का जो कॉन्टेक्ट का नौकरियों का जो पूरा का पूरा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में तो हम हायर एजुकेशन से लेकर के और किसी भी सेक्टर में इंजीनियर, डॉक्टर, सभी लोग ठेके पर काम करने वाले हैं। अभी आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा या आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा। तो ये पूरी पॉलिसी जिस तरह से आ रही है, हाँ बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि मैं इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी और इस तरह के सवाल को अगर हमको देखना पड़ेगा और संविधानिक ऑर्डर के साथ हमको अगर इस देश को सोशल सिक्योरिटी के रूप में बचाना है, तो भविष्य में काफ़ी कठिन निर्णय लेते हुए और काफ़ी सजगता के साथ शायद हमको जाना होगा। तभी शायद हम हमारे भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को। शायद मुझे लगता है कि यही एक महत्वपूर्ण बात है। एक बहुत बड़ा हिस्सा में छूट रहा है क्योंकि टाइम नहीं है। जो सोशल और कल्चरल सवाल हैं, जहाँ पर भी पिछले 30 साल में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो रिलीजियस हों, चाहे कास्ट के हों, चाहे जेंडर के हों, उस पर मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ। पर काफ़ी अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अपनी बात यहाँ रख पाया। धन्यवाद। Thank you very much, sir. The floor is open for question answer session. If you have any question, please briefly. We will take only one question because we are running short of time. Hello, sir. थोड़ा आपका ऑडियो प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो। योगेश जी,
योगेश दीवान जी, क्या आप मुझे सुन रहे हो? हेलो हेलो, आपका ऑडियो प्रॉब्लम है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, जी जी बोलिए। आप मुझे बोलिए, आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं पीपल्स रिसर्च सोसाइटी पीआरएस भोपाल में, तो पिक्चर ऑफ जी सोशल प्रोटेक्शन जो है जिसमें आपने इस टाइम डिलीवर किया, जी क्या लग रहा है? क्या ये ट्रेंड अभी आज से बेहतर हो जाएगी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी स्कीम चल रहे हैं कि ये डाउनफॉल दिखा रहा है, ये गिर रहा है, स्टैंडर्ड जो है सोशल प्रोटेक्शन का वो गिर रहा है? बस ये मेरा सवाल है। देखिए, हम लोग तो असल में हम कई सारे मोमेंटों के साथ भी काम करते हैं मध्य प्रदेश में, नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर के कई सारे मूवमेंट के साथ, और हमारे जो अनुभव हैं कि ये स्थितियां काफ़ी बिगड़ती जा रही हैं। और अभी हम कोई भी मतलब अगर आप किसी भी तरह के किसान आंदोलन का लंबा धरना देखें या अन्य तरह का देखें, या अभी बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक सवाल पर मणिपुर का सवाल देख लें, या किसी और तरह के सवाल कश्मीर में अगर आप देखें कि कश्मीर के अंदर के जो सवाल हैं 370 के बाद के, इस तरह के काफ़ी सवाल हैं जो इस दौर में लगातार उनको कटौती की जा रही है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, और उसके कारण एक बड़ा समाज हमारा इससे बाहर जा रहा है, और उनके उनके संकट खड़े हो रहे हैं। और वो सिर्फ सांस्कृतिक नहीं था, उसके साथ एक इकोनॉमिक चीज़ें भी जुड़ी हुई है ना। तो कश्मीर में जैसे मैं देख रहा था कि लैंड रिफॉर्म का सबसे पहला आज़ादी के बाद 47 के बाद जब कश्मीर आज़ाद हुआ था, उस समय कश्मीर में लैंड रिफॉर्म का वहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने स्ट्रक्चर में शामिल किया। हिंदुस्तान में केरल के बाद अगर सबसे अच्छा कोई मॉडल था लैंड रिफॉर्म का तो कश्मीर का था। पर आज हम जब देखते हैं कि उस तरह के सवाल, फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो एक बड़ा अधिकार हमको मिला, पर वो कई जगह अभी भी उसको नहीं दिया जाता, अभी भी उसको रोकने की बात हो रही है। और पिछले 2006 से आज तक उसके ऊपर काफ़ी कम आंकड़े, मध्य प्रदेश में तो हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो आवेदन है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। तो ये जो सब सवाल हैं, इसको लेकर के हम लोगों को तो काफ़ी चिंता है कि हम कैसे इस सवालों को जूझ पाएंगे। और उस तरह के मूवमेंट भी खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह का दमन और उस तरह का अत्याचार, और जो हमको संवैधानिक रूप से जो डेमोक्रेटिक राइट्स मिला था अपनी आवाज़ उठाने का, वो भी धीरे 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 कम हो रहा है। तो जो मैंने कहा कि लेबर अब अपने अधिकार की बात नहीं कर पाता, क्योंकि लेबर कानून उस तरह के आ रहे हैं। तो ये सब एक तरह से एक समाज को जकड़ने की बात है, समाज को उसके अंदर घेरने की कोशिश है। Okay, Mr. Yogesh Diwan Saab, thank you very much for your presentation. To sum up, it is that the state policies are deviating from the orientation of the welfare concept. That's the crux that he was trying to reveal here. The policies are to some extent oriented towards more market mechanism, which purely focuses on efficiency, which they define in terms of output and all that. Thank you very much. Okay. I will straightforwardly request our third presenter, resource person of the day, Mr. Bhat Iqbal Majid, Assistant Professor, Central University of Jammu, to speak on social protection and labor market participation. Thank you so much, Chairperson. I am grateful to Government Degree College, Birwa, and particularly to the faculty here and Social Work Department, Professor Mushtaq and all the students for getting us here. It's really a privilege to be here because it's always difficult to reach to the margins, and there is of course a need for us to collaborate to reach to those places which have been left out for a long. तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे हूँ, और बहुत सारी चैलेंजेस को देखते हुए कि मुझे लगता है ये एक आई मस्ट पुट माई हार्टफुल थैंक्स टू दिस कॉलेज कि जिन्होंने ये आई कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज दे हैव एंड अदर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ infrastructure and many other challenges, but still they are doing this much is appreciable, and I am really grateful to them. Having said this, let me just give you a brief, but basically what my research is about. I'm teaching in the Department of Social Work in Central University of Jammu,
And my research is more about the Bakrwals of Jammu and Kashmir. So my PhD is also about Bakrwals, which got awarded recently. So I look on the question of how Bakrwalas, which are nomadic group in J&K, how they engage with the modern state institutions, for example, health, education and all, what engagements they have with the state. And coming to that, what I will be speaking today is about the labor market participation in the social protection. Now there are three important questions that I will be trying to kind of put my point forward for your consideration. One is that why we are again revisiting the concept of social protection. Is there a need really now again to revisit this concept of social protection? And if it is so, then what sort of a system of social protection we need to look for? And the third thing is that who are to be protected from what, and whose responsibility needs to be fixed to protect those who are to be protected. Now the first argument that I am trying to build is that I am trying to establish is that in the current times, when we see that market is invading every space, whether it is the space that state owns, or whether it is the state that families own, or whether it is the state of the individual itself. Now all these spaces, all these levels, for the level of state, the level of family, is inbuilt in the schemes. But unfortunately, we are still in India when it comes to social audits. Most of our exposure and engagement with social audits has been in terms of the Rural Employment Guarantee Act only. I mean, that is only one of the schemes of social protection, but in other spheres of other schemes, there has been very little about social audits. Uh, there is also there is a we have been at this we have been part of we have been doing a lot of social audits with different populations, especially the institutional populations, and we have done some significant work in this space. In our experience, we have seen that there is a hesitation or reluctance on part of the government when it comes to social audits, especially with the institutional populations. Now, there are reasons that we see for that. One is, of course, there is a political cost. There is often, for example, if we look at doing social audits for childcare institutions, there is a very real and high possibility of incidents of abuse and violence coming out. Now, when that happens, there is a price, there is a chaos, there is a political cost that gets involved in that. Some of you might have heard about Muzaffarpur shelter home case, where a lot of children were abused for a very a long period, and almost uh, stakeholders, all parts of the structure that is created to protect children were involved in abusing the children. Koshish was the organization that did that social audit in Bihar. There is also a shortage of alternatives. You know, if you look at there are say institutions which are housing women in distress situation, women, elderly people. There is if you remove if you want to remove these people from there, there are very limited alternatives that are there. So often the approach of the local administration becomes that okay, then if nothing can be done, then let it be. You know, so that again serves as another factor for this hesitation. And then there is also a lack of perspective at different levels of execution. Many times abuse is not seen as as a critical factor. The rights of individuals are not seen as critical factors, and therefore what works or what becomes acceptable is the larger smooth running of the program, at the even if it comes at the cost of the individuals whose rights are being violated. There have been some key developments in recent past in terms of fixing the accountability, especially in terms of governance and governance with regard to the schemes of social protection. Fortunately, we had the opportunity to be part of some of these key developments happening in the country.
Government of India set up 2 years back. They set up a social audit advisory board at the Ministry of Social Justice and Empowerment, and I'm part of that advisory board. And the key mandate of that advisory board is ensuring developing a robust mechanism for social audits across different schemes and programs run by the ministry. And as you all know that in the form of the Ministry of Social Justice and Empowerment, we have a dedicated ministry which a large whose like sole mandate is ensuring social protection programs for different vulnerable and needy populations. So this social audit advisory board is one key development that has happened in recent past in the country. There have been directions from the court with regard to childcare, Supreme Court with regard to the childcare institutions. There was an initiative from central government where they inspected all the institutions across the country to check if there was any violence or abuse happening. There has been directions from the Supreme Court with regard to setting up shelters for the urban homeless across the country. Of course, there are technicalities involved in that. There has been some of now there is increased acceptance and willingness at different states regarding the social audits and including social audits as part of their systems. Recently, Maharashtra government set up a committee to develop SOPs for uh, conducting social audits for all schemes of social protection, social welfare, and social assistance. Uh, uh, we have been part of that. Chhattisgarh State Planning Commission formed a task force which again looked at developing social audits and mechanism for doing that as part of their accountability framework for schemes of social protection. So there have been some progress in this regard. We do have certain structures getting created, but by and large, I still feel that as a country where a very significant population, significant percentage of our population is requiring schemes and programs of social protection. We must have a very robust accountability mechanism. Otherwise, we would never know if the programs that are being initiated, that the programs that are being implemented, if the needs of the people, the concerns of the people are being addressed adequately, if the programs benefits are reaching the people in a right manner. Unless we have a accountability framework fix. So as a way forward, I would really like this group conference to. I mean, it would have been lovely to be physically present and connect with agency where people's lived experiences of be it any scheme, any program. What is the lived experience of the beneficiaries, the people who are getting the benefits of the scheme? What is their experience? Most of what we have right now in our systems is the evaluation, evaluation of the monitoring. Now what happens is it Mr. is Tariq, please wind up within 2 minutes. technical aspects which are seen in the evaluation process. Now those technicalities are okay, all right. Like for example, if we are looking at say childcare institutions, or say if we are looking at old age pensions, if we are looking at hostel for say as tribal students, what we are looking at the facilities, the infrastructure. Recently, I was asked by the Maharashtra State Human Rights Commission to look into a case of some violations that happening one of the hostels for the tribal students. Now, what they were looking at was the technicalities in terms of the infrastructure. So, beddings are there, food is there, but the building is dedicated or not. Mr. Tariq, All we of are that is not able to hear your voice. There are some distortions. Please bring your laptop closer okay. I don't know what's and happening. please wind up Usually, within 2 minutes. uh, yeah, I'm just winding up. So I was saying that recently I was asked by the Maharashtra State Human Rights Commission to look into a case of abuse at a shelter, at a hostel for tribal students. Now most of the monitoring mechanism that are there as of now focus on the infrastructure and technical aspects. So they look into whether the quality of bedding is good, whether there are enough windows, the space is adequate, food is okay. Now all of that is important, all of that is critical, but Can what you is please most put on critical your is headphones?
Sir, can you please put on your headphones? We are not clearly hearing you. Still A bad? lot of distortion. Is it still bad? Hello? Hello? No, there's no voice. Hello? Hello, can you hear me? Sir, you are not audible. What do I do now? Hello, can you hear me? Yes, carry on, please. Okay, so I don't know at what point, till what point I was audible, but last point that was